Okay, students, so let's get started with O-level physics, May June 2023, paper 1, variant 2. ये MCQs paper का second variant है. Let's see this. In an experiment, a ball is rolled down a curved track. मतलब आप एक curved track के downward ball को roll कर रहे हो. That is about half meter long. ठीक है, ये दिख रहा है. Which measuring device is used to measure the length accurately? अच्छा जी, length हम accurately किस तरह measure कर सकते हैं? Can we use a meter rule? नहीं, meter rule तो straight surfaces के लिए use हो सकता. माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं? नहीं, माइक्रोमीटर इज यूज फॉर स्मॉल लेंस. स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं? नो, बिकॉज स्टॉप वॉच इज यूज फॉर टाइम. Can we use a tape measure? Yes. Can we use a measuring tape? Yes, because measuring tapes are used to measure curved surfaces and they can measure lengths greater than 1 meter. D is your answer. Which row describes acceleration, displacement, distance and speed? Acceleration क्या है बेटा? Vector quantity. Option A or B cancel out. Displacement is also a vector quantity. Option C is also cancelled out. D is your answer for 2. Let's further move ahead. What is the size of the resultant of the two forces shown? अच्छा जी, आपने resultant निकालना है of the two forces. How will you do that? थोड़ा सा analyze करो. Can you realize this is the head of the vector? This is the tail of the vector. This is the tail of the vector. This is the head of the vector. Currently, both the tails are connected together. Currently, बेटा दोनों tails आपस में connected हैं. Head to tail rule is not being satisfied. What will you do? You will take this 3 Newton vector towards the right side like this. हमने 3 Newton vector को क्या कर लिया? Right side पे ले गए. Now, if you analyze, this is the head, this is the tail, this is the head. अगर आप अब realize करो, the head of 4 Newton vector is connected to the tail of the 3 Newton vector. Head to tail rule is being satisfied. Can I mark the resultant vector? Yes. From the tail towards the head. This is your resultant vector. Can you calculate this resultant vector? Yes. Apply Pythagoras theorem. Resultant square is equals to 3 square plus 4 square. Resultant is equals to 9 plus 16 under root. Resultant is equals to 5 Newton. C is your answer. Let's move on to question 4. The curved line on the distance time graph. The curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. Okay, so we have the distance time graph. The straight line is tangent to the curve at 10 seconds. Okay, so we have a tangent at 10 seconds. Now, as soon as you see the distance time graph, you must remember one thing. बेटा जैसे ही आपने distance time graph देखा ना, आपको एक चीज याद आनी चाहिए, that the gradient of distance time graph is equals to speed. Gradient of distance time graph बेटे क्या होता है? Speed. What is the speed of the toy car at 10 seconds? आपने speed of the toy car निकालनी है at 10 seconds at this point. So let's calculate the gradient at this point. भाई इस point पे gradient निकालते कैसे निकालेंगे? At this point your x-axis is 10, y-axis is 6. Can you take any other point on the tangent? Yep, this point. 0 x-axis, y-axis 3. बेटा देखो हमेशा याद रखो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. अब आपने 10 सेकंड्स पे ग्रेडियंट निकालना है. कैन यू रियलाइज दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व? now यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ. हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व. बेटा अगर आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालना है तो आप क्या करोगे? हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ कर्व, क्या करोगे? ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट at the specific point. जहां पे भी आपने ग्रेडियंट निकालना है वहां पे आपने टेंजेंट बनाना है एंड देन कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. ठीक है शहजादो, जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज अ कर्व होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज अ कर्व होगा, व्हाट विल यू डू? यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट द स्पेसिफिक पॉइंट. 10 सेकंड्स में मैंने स्पीड निकालनी थी, 10 सेकंड्स में मैंने टेंजेंट बना दिया एंड आई कैलकुलेटेड द ग्रेडियंट एट 10 सेकंड्स. ठीक है, हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया ऑफ द टेंजेंट टू कैलकुलेट द स्पीड.
Now, if you realize this is 10, 6, and this is 0, 3. Let's say this is x1, let's say this is y1, let's say this is x2, let's say this is y2. ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है? 3। y1 की वैल्यू क्या है? 6। x2 की वैल्यू क्या है? 0। x1 की वैल्यू क्या है? 10। दिस कम्स आउट टू बी -3 ओवर -10। कैंसिल कैंसिल। velocity comes out to be 0.3 meters per second. A is your answer to question number 4. So हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया? टू समराइज इट, हमने देखा कि वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ वी नो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? स्पीड। नाउ ग्रेडियंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट दिस इज अ कर्व। कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमने क्या किया? वी ड्रॉ टेंजेंट एट द स्पेसिफिक पॉइंट, और हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया। ए इज योर आंसर। The diagram shows four balances W, X, Y, and Z. Okay. Diagram में चार balances है W, X, Y, and Z. The scales of all the balances are calibrated on Earth to measure mass. Okay. Which balance also measures mass correctly when used on moon? अच्छा, इनमें से कौन सा बैलेंस ऐसा है जो मून पे भी करेक्ट मास मेजर करेगा? बेटा अगर आप स्प्रिंग बैलेंस पे देखो तो स्प्रिंग बैलेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ओनली गेटिंग अप्लाइड डाउनवर्ड ओनली वन टाइम। टॉप पैन बैलेंस में भी यही हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ओनली बीइंग अप्लाइड वंस, और यू कैन से डाउनवर्ड। इन लीवर आर्म बैलेंस कैन यू रियलाइज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो रही है, राइट साइड पे भी अप्लाई हो रही है। द effect of gravitational field strength will get cancelled out. So either it is placed on Earth or on Moon. Y will give you the correct reading. देखो बेटा हुआ क्या है, W और X में आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ओनली वंस एक्ट कर रही है, दिस विल इफेक्ट द रीडिंग्स। However, in Y, the gravitational field strength is acting at both the points left and right. The effect of gravitational field strength cancel out, and hence अर्थ और मून पे आपका मास सेम आएगा विथ वाई। सेम इज द सिनेरियो फॉर जेड। Gravitational field strength acts on the left as well, on the right as well. Both of them cancel out. This two band balance will also give the correct reading either on moon or on earth. तो y और z की रीडिंग जो है वो करेक्ट आएगी, either you are on moon or on earth। 5 का आंसर इज डी। लेट्स further move ahead। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? spacecraft carries a probe to Mars when the gravitation field strength is 3.7। Okay, the weight of this, ठीक है। अच्छा देखो मार्स पे क्या हो रहा है, मार्स पे आपकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बेटा? 3.7। मार्स पे आपका वेट क्या है? 370। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। पहले यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं, मार्स एंड अर्थ। ठीक हो गया। मार्स पे आपका ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है भाई? 3.7। मार्स पे आपका वेट क्या है भाई? 370 न्यूटन। अर्थ पे आपकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बेटा? 9.8। यू हैव टू कैलकुलेट द मास एंड वेट ऑफ द प्रोब ऑन अर्थ। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मास ऑन मार्स। W इज इक्वल टू mg। W क्या है? 370। मास हमने निकालना है, G इज 3.7। Mass comes out to be 370 divided by 3.7, that is equals to 100 kg। बेटा अब आपको क्या एक की पॉइंट याद है? दैट मास रिमेन्स अनइफेक्टेड। आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, योर मास रिमेन्स अनइफेक्टेड। So your mass for planet Earth is also 100 kg। Option C and D gets cancelled out। अब आपने क्या निकालना है? वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ किस तरह निकालोगे? मास इनटू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। मास इज 100, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 928। द वेट ऑन अर्थ कम्स आउट टू बी 980 न्यूटन। बी इज योर आंसर। आगे बढ़ते। A student determines the density of a liquid. Which equipment does the student use? अच्छा जी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डू यू रिमेम्बर? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम।
बेटा मास आप किससे मेजर कर सकते हो? बैलेंस से। वॉल्यूम आप किससे मेजर कर सकते हो? मेजरिंग सिलेंडर से। इफ यू हैव both of these things you can easily calculate the density. B is your answer. Newton's third law describe a pair of forces. Which law describe whether the two forces are of the same type and whether they act on the same object? बेटा फोर्सेस की टाइप क्या होती है? सेम होती है, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो आपकी दो पेयर ऑफ फोर्सेस होती है दे आर ऑफ द सेम टाइप, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज द सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये पता है। विच फैक्टर्स इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस? अच्छा जी, ब्रेकिंग डिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? स्पीड ऑफ द कार, यस। टायर्डनेस ऑफ द ड्राइवर, नहीं, टायर्डनेस ऑफ द ड्राइवर तो थिंकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करेगा। कंडीशन ऑफ द रोड विल आल्सो इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ही इज योर आंसर। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस covered from the time when you apply the brake till when your car comes to stop. Braking distance कौन सा distance होता है? The distance traveled when you first apply the brake between the driver applying the brake and the car coming to rest. The distance traveled between the car driver applying the brake and car coming to rest. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं। A load extension graph for a spring is shown. अच्छा जी, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ आपको गिवन है। Which point is the limit of proportionality? बेटा हमेशा याद रखो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द पॉइंट जहां पे आपकी फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ लीनियर होना छोड़ दे। The point where your force versus extension graph stops being linear is known as your limit of proportionality. I can see the maximum point till where this force versus extension graph is linear is Q. Q आपकी limit of proportionality हो जाएगी। C और D cancel out। अच्छा, now if I plot force on the y-axis, extension on the x-axis, बेटा इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? What will be the gradient of the graph if I plot force on the y-axis, extension on the x-axis? The gradient of this graph will be equal to the spring constant. बेटा किस रीजन का ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट? ये लीनियर रीजन का ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट ऑफ दिस लीनियर रीजन विल बी इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड का आंसर इज ए। लेट्स फर्दर मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं भाई। 11 पे आ जाओ। A uniform beam is pivoted at its midpoint. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वेट acts in the middle. Okay. An object weighing 40 Newton is placed on the beam 20 centimeter to the left of the pivot. ठीक है, 40 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट पे हमने प्लेस कर दिया। Which force and position balances the system? सिस्टम बैलेंस करने का मतलब क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट must be equal to clockwise movement. Currently, if you realize this 40 न्यूटन की फोर्स is creating which type of a movement? ये 40 न्यूटन की फोर्स जो है आपकी बीम को या रॉड को किस डायरेक्शन में मूव कराएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैन यू कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? फोर्स इनटू द डिस्टेंस दैट इज 2800 न्यूटन सेंटीमीटर इज योर एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपने सिस्टम को बैलेंस करवाना है, out of these four options you need an option that generates a clockwise movement of 800 न्यूटन सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल हो जाएगा, सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। now let's analyze four options. A 20 newton load acting downward 40 centimeter to the right of the pivot. अच्छा जी, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर लोड acting downward and the distance from the pivot is let's say 40 centimeter.
कैन यू रियलाइज ये लोड आपको किस डायरेक्शन में टर्न करवाएगा? क्लॉकवाइज। कैन यू कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मोमेंट हियर? यस, 20 की फोर्स है, 40 का डिस्टेंस है, द क्लॉकवाइज मोमेंट कम्स आउट टू बी 800 न्यूटन सेंटीमीटर। वाओ, वी आर वेरी लकी। बेटा ऑप्शन ए में ही आपके पास ऐसा ऑप्शन आ गया है दैट कैन बैलेंस आउट द सिस्टम। To balance out the system, I needed 800 Newton centimeter clockwise movement. Why? Because मेरे anti-clockwise movement क्या थे? 800 Newton centimeter. तो option A is correct. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. A worker pulls a rope with a force P through a distance D in the direction of the force as shown. Okay. This causes a block of weight W to move vertically upwards through a height of H. हाउ मच वर्क इज डन बाय द वर्कर? बेटा वर्कर का वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्कर फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है? पी। हाउ मच डिस्टेंस इज दिस फोर्स मूविंग? डिस्टेंस डी। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, पी इंटू डी। द वर्क डन बाय द वर्कर इज इक्वल टू पी इंटू डी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स मूव फर्दर अहेड. A battery is connected in a circuit to light a lamp. What is the energy stored in the battery? Always remember batteries में कौन सी energy store होती है बेटा? Chemical energy. आगे बढ़ते हैं. What is the property of both liquids and gases? Both liquids and gases की क्या properties होती है बेटा? Yes. Both liquids and gases can flow. ठीक है. अच्छा जी, ये देखते हैं. In an experiment, the volume of the gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased. ठीक है, pressure of the gas को आप increase कर रहे हो, volume को आप measure करते जा रहे हो. So you are doubling the pressure. आपने pressure को double किया, volume क्या हो गया? Half हो गया. Then you again triple the pressure. आपने pressure को triple किया, volume क्या हो गया? 1/3 हो गया. आपने फिर pressure को multiply by 4 किया, volume क्या हो गया? Divided by 4. Okay. Yeah, I have done nothing wrong here. Have I done anything wrong here? Pressure आपने 4 times increase किया, आपका वॉल्यूम जो है वो 4 times decrease हो गया. परफेक्ट है, ठीक है. What is a possible explanation for these results? As the pressure is doubled, gas starts leaking into the cylinder? No. प्रेशर डबल होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है ना. आफ्टर द प्रेशर इज डबल्ड द गैस स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर. यस, ये हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम हाफ हो रहा है ना. एज योर प्रेशर इज डबलिंग, वॉल्यूम इज हाफिंग. सो दैट मीन्स आपकी गैस लीक आउट कर रही है आउट ऑफ द सिलेंडर. दिस माइट बी पॉसिबल. बी इज योर आंसर. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. The diagram shows some examples of thermal expansion. Expansion of liquid in a thermometer. Okay. Expansion of a tight lid on a glass container. ठीक है. अगर tight lid की expansion होगी on a glass container, the lid will open easily. Okay. Expansion of the long metal beam supporting a roof. Long metal beams की expansion supporting a roof. This will destabilize या make the structure unstable. This will make the structure of the roof unstable. Okay. What do we have to answer? In which diagram is thermal expansion useful? बेटा थर्मोमीटर में तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? बड़ी यूजफुल है. एक्सपेंशन ऑफ अ टाइट लिड ऑन अ ग्लास कंटेनर, यहाँ पर भी थर्मल एक्सपेंशन बहुत यूजफुल है बिकॉज अगर लिड एक्सपैंड कर जाएगा इट विल इजीली ओपन अप. हाउएवर ऑप्शन आर में आपकी थर्मल एक्सपेंशन यूजफुल नहीं है बिकॉज द थर्मल एक्सपेंशन विल मेक द रूफ अनस्टेबल. So only P and Q. 16 का answer is B. Let's further move ahead. Which statement about copper explains why it is a better thermal conductor than glass? Copper has free electrons. There are free electrons in the copper. D is your answer. Simple. हमेशा याद रखो मेटल्स की कंडक्टिविटी नॉन मेटल से ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Which statement describe the transfer of thermal energy in a liquid by convection? A decrease in its density causes the heated liquid to rise. बिल्कुल हो सकता है. Free electrons, no. Infrared, no.
पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नो, यही होगा। 18 का आंसर इज ए। 18 के आंसर में ए में हम क्या कह रहे, जैसे ही आपका लिक्विड हीट अप होगा, एज योर लिक्विड हीट्स अप, एज द टेम्परेचर ऑफ योर लिक्विड इंक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ योर टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स डेंसिटी ड्रॉप्स एंड इट राइजेस। परफेक्ट, ठीक है। 19 पे आ जाओ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय अ वर्टिकल प्लेन मिरर। अच्छा जी, वर्टिकल प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, ये लिख लो। प्लेन मिरर्स हमेशा अपराइट इमेजेस बनाते हैं। प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं दैट आर ऑफ द सेम साइज। लास्टली, प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं दैट आर लैटरली इनवर्टेड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सिर्फ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हो? वर्चुअल एंड अपराइट बी इज योर आंसर। A ray of light passes into a block of transparent material as shown. What is the refractive index of the transparent material? आपने refractive index निकालना है यहाँ का। Now, can you realize if I draw a normal here, what will be your angle of incidence? ये this total is 90 degree. Can you calculate angle of incidence? Yes. 90 minus 35 is your angle of incidence. Angle of incidence क्या आ जाता है? 55 degrees is your angle of incidence. 55 degrees is your angle of incidence. Can you calculate angle of refraction as well? ये निकालना है R आपने। Yes. This entire thing is 90. R किसके इक्वल आ जाएगा? 90 minus 60, that is equals to 30 degrees. Simple. अच्छा जी, now you have to calculate the refractive index n. ये refractive index कौन से मीडियम का है बेटे? सेकेंड मीडियम का है। If you want to calculate the refractive index of the second medium, which formula will you apply? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का कौन सा फॉर्मूला होता था बेटा? साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई क्या है भाई? साइन ऑफ 55। साइन आर क्या है बेटा? साइन ऑफ 30। कैन यू कैलकुलेट दिस? पुट दिस इन द कैलकुलेटर। साइन ऑफ 55, okay, divided by sine of 30. What does your refractive index comes out to be? 1.64। C is your answer। ठीक है, 20 का आंसर comes out to be what बेटे? C। आगे बढ़ते हैं। The diagram shows light incident on straight edges of a semicircular glass block after passing through it. Which diagram shows refraction and an angle equal to the critical angle of the glass? अच्छा जी, critical angle of the glass। देखो, critical angle पे हमेशा क्या होता है? If your angle of incidence is equal to the critical angle, your angle of refraction becomes 90 degree. The answer here is C। Let's further move ahead. Which radioactive isotope can be used for measuring cracks or flaws in metal components? अच्छा जी, कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज हो सकता है टू मेजर क्रैक्स और फ्लॉज इन मेटल कंपोनेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी अल्फा पार्टिकल वाले हैं इनको आप कैंसिल कर दो, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स तो क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स तो मेटल के थ्रू पास ही नहीं कर सकते। दे आर स्टॉप बाय अ थिन शीट ऑफ पेपर, तो मेटल से कहाँ से पास करेंगे? तो ये तो कैंसिल आउट कर दो। गामा emitter यूज कर सकते हैं, and we will use a gamma emitter of a larger half life so that the count rate does not drop. B is your answer। ultrasound wave that is not audible to healthy human ear, ठीक है। which range of frequency contains only ultrasound? भाई अल्ट्रासाउंड क्या होती थी बच्चों, याद है कुछ? अल्ट्रासाउंड are any wave with a frequency greater than 20,000 hertz या पे 20 kilohertz if you want to make it that way। So कौन सी ऐसी रेंज है जिसमें frequencies greater than 20 kilohertz है? सिर्फ D is your answer। 30 kilohertz से लेकर 30 megahertz। megahertz क्या होता है? 10 is the power of 6। What proves that a metal bar is a permanent magnet? It attracts both and no. It attracts one end of no. It conducts electricity. It repels one end of another magnet। Yep। हमेशा याद रखो, परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट्स होते हैं दैट रिपेल वन एंड एंड अट्रैक्ट वन एंड। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट आइडेंटिफाई करने का मेन फीचर ये है कि वो मैग्नेट का एक एंड रिपेल करेगा। However, temporary magnets क्या करते हैं? Any geniuses in the chat?
टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या करते बेटा, किसी को याद है? यस, दे अट्रैक्ट बोथ एंड्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या कर लेते हैं, दोनों एंड्स ऑफ द मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये याद रखना। द डायग्राम शो द बार मैग्नेट एंड फोर लेबल्ड एरोज। विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करनी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, लाइक दिस। नॉर्थ से साउथ लाइक दिस। विच एरो इज मेड करेक्ट, डी वाला। ओके। A shoe becomes positively charged by friction when it rubs against the carpet. What happens as the shoes becomes charged? बेटा देखो, शू क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो शू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। शू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कारपेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द कारपेट, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 26। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कारपेट को, और लूज कौन कर रहा है, शूज लूज कर रहा है। A metal conductor is connected between the positive and negative terminals of the battery. Which row describes the direction of movement of the particles that flow in the conductor and their name? अच्छा जी, मूवमेंट किन पार्टिकल्स की होती है, हमेशा नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ये प्रोटॉन्स वाला ऑप्शन तो कैंसिल कर दो। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। 27 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। ओके। Three identical cells are connected in parallel to a resistor. What is the advantage of using three cells in parallel rather than using a single cell? अच्छा जी, अगर आप तीन सेल्स को पैरेलल में लगाते हो तो क्या होगा, each cell produces more energy, no. Each cell produces more charge, no. Each cell takes longer to discharge. ये हो सकता है, सी कुड बी योर आंसर। देखो, जब भी आप सेल्स को पैरेलल में लगाते हो तो आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज कर जाती है। A student has three resistors. She connects the resistors in different arrangements. What is the minimum and maximum resistance of the arrangement? ठीक है, जब भी आपने maximum resistance निकाल, whenever you have to calculate the maximum resistance, बेटा आप क्या करोगे, सारे resistors को सीरीज में लगा दो। जब भी आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी है, 15 ओम 15 ओम 15 ओम, सारे रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में लगा दिया, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15 प्लस 15 प्लस 15, 45 ओम। जब भी आपने मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी है बेटा, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम रेजिस्टेंस, आप क्या करोगे, सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दो इस तरह, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। दिस इज 15 15 15। कैन यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? यस, 1 ओवर 15, 1 ओवर 15, 1 ओवर 15। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, हाँ जी, 1 over total resistance is equals to 3 over 15. Cross multiplied, 15 divided by 3 is equals to total resistance is equals to 5 ohms is your total resistance. तो जब भी आपने मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है, व्हाट डू यू डू, यू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जब भी आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है, यू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो मिनिमम क्या हो गई 5, मैक्सिमम क्या हो गई 45, बी इज योर आंसर, सिंपल। The circuit diagram shows the variable resistor R connected in parallel to the lower section of a potential divider. ठीक है, एक वेरिएबल रेजिस्टर R है बेटा जो कनेक्टेड है टू द लोअर सेक्शन ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। द रेजिस्टेंस ऑफ R इंक्रीजेज। अच्छा, ये जो R की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। व्हाट हैपेंस टू द 2 वोल्ट मीटर रीडिंग्स V1 एंड V2? देखो बेटा, अगर R की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन, अगर R की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, the resistance of this entire parallel combination will increase, है ना। अगर R that is variable resistor की resistance increase होगी तो क्या होगा, पूरे parallel combination की resistance क्या करेगी, spike up करेगी या increase करेगी। as the resistance of the entire parallel combination increases, क्या होगा, the voltage across this parallel combination या the voltage reading of V2 will increase। तो V2 तो इंक्रीज होगा, या डिक्रीज वाले ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो।
अब बेटा देखो, अगर V2 इंक्रीज होगा तो V1 को क्या होगा, जस्ट फोकस फॉर अ बिट। लेट्स से एक 6 वोल्ट्स की बैटरी थी। इनिशियली आपका V2 3 वोल्ट्स था, V1 3 वोल्ट्स था। अब आपका V2 बढ़ के हो गया है 4 वोल्ट्स, V2 इंक्रीज हो गया है। What will happen to V1? Can you now realize 4 plus 3 टोटल वोल्टेज कितने हो रहे हैं, 7 वोल्ट्स। बेटा अगर सिर्फ आपका V2 इंक्रीज हो जाएगा तो देखो हो क्या रहा है, 4 plus 3, आपका टोटल वोल्टेज जो है वो 7 वोल्ट्स बन रहा है, ग्रेटर देन द बैटरी का वोल्टेज दैट इज 6 वोल्ट। दिस इज नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू रिड्यूस V1। V1 डिक्रीज होके 2 हो जाएगा, 4 plus 2 वापस से बैटरी का वोल्टेज 6 आ जाएगा। So V2 increases, V1 decreases, B is your answer here. Easy peasy, lemon squeezy. आगे बढ़ते हैं जी। The power consumption of a microwave oven is 1500 watts. Okay. The cost of 1 kilowatt hour of electrical energy is 24 cents. Okay. What is the cost of using the microwave for 10 minutes? अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस 1500 वोट्स को किलो वोट्स में कन्वर्ट करो। डिवाइड किससे करोगे, 1000 से। 1500 डिवाइडेड बाय 1000, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1.5 किलो वोट्स। और कितने घंटों के लिए चल रहा है, कितने घंटों के लिए चल रहा है भाई, 10 minutes divided by 60, that comes out to be what, 10 divided by 60 is equals to 1 over 6 hours. Simple. Can you calculate the total energy? एनर्जी निकाल सकते हो, पावर इनटू टाइम। पावर क्या है भाई, 1.5 किलोवाट। कितने घंटों के लिए चल रहा है, 1/6, मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट डज योर एनर्जी कम्स आउट टू बी, 1.5 डिवाइडेड बाय 6। योर एनर्जी इज इक्वल टू 0.25 किलो वॉट आवर्स। अब आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 24 सेंट्स। तो 0.25 किलोवाट आवर कितने सेंट्स के इक्वल होगा, मल्टीप्लाइड बाय 24 कर दो। योर आंसर कम्स आउट टू बी 6 cents is your answer. A is your answer. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा। A coil of wire is dropped above a magnet। ठीक है, coil of wire को हम above a magnet drop कर रहे हैं। As the coil falls over the magnet, an EMF is induced across the coil। ठीक है, जैसे ही coil को आप drop कर रहे हो, EMF is induced across the coil. What does not affect the magnitude of the EMF induced across the coil? अच्छा जी, क्या चीज जो है ईएमएफ को इफेक्ट नहीं करती। चेंजिंग द नंबर ऑफ द कॉइल्स इफेक्ट्स दैट। चेंजिंग द हाइट आल्सो इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट डज नॉट इफेक्ट योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। सी इज योर आंसर। ठीक है। The results of the alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following: nuclear fusion नहीं, radioactive decay नहीं, the existence of isotopes नहीं, the size of the nucleus. Nucleus is very small. This was provided evidence by the alpha particle scattering experiment. A nucleus of isotope of cobalt is represented by this formula. What is the composition of this nucleus? हमेशा याद रखो बॉटम साइड पे क्या लिखे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वी हैव 27 प्रोटॉन, सी एंड डी कैंसिल आउट। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 59 माइनस 27, बताओ कितने होंगे न्यूट्रॉन्स, 32। ए इज योर आंसर। परफेक्ट। The only stable isotope of gold has 79 protons, 118 neutrons in a nucleus of an atom. How many electrons are there in a neutral atom of this isotope? हमेशा याद रखो, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा प्रोटॉन्स कितने हैं, 79, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 79। बी इज योर आंसर। सिंपल। 36 पे आ जाओ। A sample of radioactive isotope with a very long half-life is placed next to a detector. Sheets of different metals are inserted one at a time between the radioactive sample and the detector. The background count rate is subtracted from the readings on the detector and the corrected count rates are recorded in the table। ठीक है, corrected count rates आपके पास यहाँ पे। Which type of radiations are emitted by the radioactive sample? बेटा radioactive sample कौन सी type of radiation emit कर रही है हमने देखना है। जब आपकी कोई भी शीट प्लेस नहीं है तो आपका काउंट रेट क्या है, 450।
व्हेन यू प्लेस अ थिन एल्यूमिनियम शीट क्या होता है, काउंट रेट रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, बीटा प्रेजेंट। ओके। जब आप लेड शीट को प्लेस करते हो तो आपका काउंट रेट फर्दर डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स गामा इज प्रेजेंट। नाउ व्हेन यू प्लेस अ थिन पेपर शीट, आपका इनिशियल काउंट रेट क्या था, 450। जब आपने पेपर शीट प्लेस की तो आपका काउंट रेट क्या हो गया, 452। देर इज नो और स्लाइट ड्रॉप, बहुत ही हल्का सा ड्रॉप है या बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स नॉट प्रेजेंट। अगर अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, आप पेपर प्लेस करते, तो देयर वुड हैव बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। तो बीटा एंड गामा आर प्रेजेंट। 36 का आंसर इज व्हाट, सी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बेटा देखो, इस एक्सपेरिमेंट को देखने का ना, ये जो होता है, आप शीट्स प्लेस करते हो और देखते हो कि कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं, इसका बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। इफ यू प्लेस एल्युमिनियम and the count rate drops, मतलब बीटा प्रेजेंट है। If you place lead and the count rate drops, that means gamma present है। If you place paper and the count rate drops, that means alpha present है। However, if you place paper and count rate drop नहीं हो रहा, that means alpha is not present। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल प्लेस करने से आपका काउंट रेट ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स दैट रेडिएशन इज प्रेजेंट। अगर नहीं हो रहा तो दैट रेडिएशन इज एब्सेंट। In a fission reactor, which particles cause a uranium nucleus to split? Obviously, a neutron hits a uranium nucleus. Acha ji, let's see this. What is the purpose of moderators in nuclear reactors? To absorb all the neutrons? No. To produce more neutrons? No. To remove thermal energy? No. To slow down the neutrons in order to continue the chain reaction. ठीक है. In which region of the electromagnetic spectrum does sun radiate the most energy? भाई sun किस region में most energy radiate करता है? Infrared region. Let's move on to question. 44 stages of a life cycle of a star are given until it becomes a red giant as shown. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज बैलेंस्ड बाय द, ठीक है, ये तो मेन सीक्वेंस स्टार है ना, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। ओके, दिस इज मेन सीक्वेंस स्टार। इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है दिस कुड बी योर फर्स्ट स्टेप। इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसके बाद क्या होता है, inward force of gravitation. This is your first step. This is your second step. Inward force of gravitation equals to an outward force from the center. फिर क्या होता है, your gas में hydrogen gets converted into helium. This is your third step. And then eventually the star expands. तो basically आपका combination जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, x के बाद w, w के बाद Z, Z के बाद Y. Any answers like that? Is your answer? This marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.